Hello students, we are talk about types of fraction, standard 7th B, standard 7th NCERT syllabus. So today we are talk about on the topic types of fraction. So we have 6 types of fraction, and first one is proper fraction, second one is improper fraction, third is mixed fraction, fourth is like fraction, fifth is unlike fraction, and last but not the least, not mentioned on the board, is called unit fraction. मैं यहाँ पे मैंने 4 फ्रैक्शन जो है भी आपको दिखाए हैं, बाकी के 2 जो है मैं ये 4 एक्सप्लेन करने के बाद आई विल शो यू. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर आपको यहाँ पे एक से ज्यादा यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म्स दिए हुए हैं तो आप वहां पे कैसे पता लगा सकते हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि दैट नंबर इज या पर्टिकुलर वो जो नंबर है दैट इज नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. सो लेट्स सी, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. वहां पर आपका जो न्यूमरेटर है यानी कि टॉप नंबर, अगर आप यहां पे देखते हैं तो टॉप नंबर जो है वो कैसा होता है, स्मॉलर देन, जो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर यानी कि बॉटम नंबर से. सो दैट इज नोन एज अ प्रॉपर नंबर. सेकंड वन इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल के अंदर 1 जो है वो कैसा है, छोटा है, और 3 कैसा है, बड़ा है. सो यहाँ पे 1/3 जो है वो कैसा होता है, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. लेट्स टेक इट एग्जांपल, यहाँ पे एक ले लेते हैं प्रैक्टिकल की. सपोज आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है और उसके अंदर मैंने क्या किया, पार्ट्स बना दिए हैं. आई विल मेक अ पार्ट्स ऑन द सर्कल, इन द सर्कल. सो यहाँ पे लेट्स सी टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स है हमारे पास. वी हैव 8 पार्ट्स इन दिस सर्कल. सो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि टोटल पार्ट्स जो है वो 8 है, तो आपकी वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में यानी कि बॉटम नंबर जो है आपका कितना हो जाएगा, 8, बिकॉज़ वी हैव टोटल हाउ मेनी पार्ट्स इन द होल सर्कल, total 8 parts in a whole circle. So we are taking in the bottom number as a 8. And now suppose I'll state it here, 3 parts. I'll state it here 3 parts on these total numbers. So यहाँ पे total कितने parts है, यहाँ पे 1 2 and 3 parts are stated. So we are taking as a 3 as a top number. It's mean numerator. I'll take it numerator as a 3 and 8 जो है वो यहाँ पे टोटल जितने भी यहाँ पे पार्ट्स है that is called 8 और वो होगा हमारा बॉटम नंबर. So I hope आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसका पता चल गया. Let's move on another type of fraction that is known as a improper fraction. So what is improper fraction? Opposite of proper fraction. यहाँ पर इम्प्रॉपर में क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है और आपका न्यूमरेटर जो है कैसा होता है, बड़ा होता है. सो यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और इक्वल भी होगा. लेट्स सी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर then or equal, numerator is greater than or equal denominator. Numerator is greater than or equal denominator. Let's see examples. यहाँ पे देख लेते हैं एक बार. For example, you can write as a 4/1, 9/7, 181/11. So these are the example of improper fraction. Why? Because in these all cases you can see 4 is greater than 1, 9 is greater than 7 and 181 is greater than 11. So top numbers, it's mean numerator is greater than denominator, it's mean bottom number. यहाँ पे ऊपर वाले जो डिजिट्स हैं वो बड़े हैं किससे, नीचे वाले से. ऊपर वाले डिजिट जो है नीचे वाले से बड़े हैं. That is why we can say
these examples are as known as a improper fraction. I hope improper fraction जो है आपको clear हो गया है. Let's move on another type of fraction that is known as a mixed fraction. So what is the definition of mixed fraction? So यहाँ पे mixed fraction है जो वो it is a combination of both fraction. It means mixed fraction is a combination of proper fraction and improper fraction. Proper fraction and improper fraction. Yes friends. So let's see how is it possible. देखते हैं यहाँ पर. I'll write the definition first of all and then I'll show you example. What is the how it is possible. It is a combination of proper and improper. We are taking the examples of improper and I'll show you how we can make it as a mixed fraction. So ready? A combination of proper and improper fraction. A combination of proper and improper fraction that is known as a mixed fraction. Let's see their example. I'll take it improper fraction. मैं यहाँ पे improper fraction का example लेता हूँ and I'll show you how it is possible कि proper and improper का combination होगा तभी mixed fraction बनेगा. So let's take a 9 divided by 7. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 9/7. 9 divided by 7. So 9 को divide करना है 7 से. 7 बन जा 7 as you know division आपको आता है 7 बन जा 7. So सीधी सी बात है यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या बचेगा मेरे पास what we have 9 minus 7 2. 2 is a remainder. So 7 जो है वो कहाँ था 9/7 में 7 डिनोमिनेटर में था तो as it is रहेगा 7 में as it is रहेगा. अब न्यूमरेटर में क्या था टॉप नंबर क्या था हमारा 9 था. So if I want to make this fraction in a mixed fraction so what can we do 7 as it is आपका जो यहाँ पे डिवाइजर था वो as it is लिख दिया मैंने. आपका जो यहाँ पे आंसर आया है यानी कि क्वोशंट आपका जो क्वोशंट है 1 वो आ जाएगा यहाँ पे एज अ होल और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो होगी आपकी न्यूमरेटर यानी कि टॉप नंबर. यहाँ पे ये बन जाएगा आपका टॉप नंबर. सो दैट इज ये क्या हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. लेट्स टेक इट हाउ इज इट पॉसिबल. यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे दो डिजिट है यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड होल डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करो 7 बन जा 7. जो भी आंसर आया उसमें ये न्यूमरेटर जो है वो ऐड कर दीजिए. देन यू विल गेट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और सिंपल आप यही चेक करोगे 2/7 जो है 2/7 है that is known as a proper fraction because numerator is smaller than less than denominator. So that is why we can say it is a combination of proper fraction and improper fraction. So let's take it 2 or 3 more examples. 4 9 5 2 7 9 1 3 70. So these are the examples. ये जो है वो कैसे होंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे. Let's now get what is the definition of like fraction. Fraction having the same denominator are called like fraction. Fraction having the same
denominator are called like fraction. Let's see the example. Let's see examples. So, what is the definition? I will repeat again. Fraction having the same denominator are called like fraction. Let's see examples. You can say 9 upon 7, 5 upon 7, 4 upon 7, 3 upon 7. So all are fraction form. Is अगर आप यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर देखोगे, you can check that denominators जो है same in all the fractions. So यहाँ पे 7 जो है, it is common in all fractions. So this kind of fractions are known as a like fraction. This type of fraction are known as a like fraction. So I hope यहाँ पे आपको ये 4 यहाँ पे जो types है आपको यहाँ पे easily समझ आ गए हैं. Let's move on another type of fraction. So we have studied 4 examples, 4 types of fractions: proper fraction, improper fraction, mixed fraction, and like fraction. Now we are talking about what is unlike fraction and what is unit fraction. And we have completed today's lecture and today's topic. So first of all, we have studied about the unlike fraction. What is unlike fraction? So यहाँ पे fraction having a different denominator. Fraction having a different denominator. Fraction having a different denominator. Different denominator are called unlike fraction. Fraction having a different denominator are called the unlike fraction. So let's see examples of unlike fraction. Different denominator. You can write as well 9 upon 8, 7 upon 6, 5 upon 9, 8 upon 6. These are the examples of unlike fraction. These are the example of unlike fraction. Why? Because as we showed, all the denominators are different. All the value of denominators are the different. So that's why you can say this is the examples of unlike fractions. Right now, we have studied about unit fractions. We have studied about a unit fraction. What is unit fraction? So fraction having a numerator as a 1. Fraction having a numerator as a 1 is called unit fraction. Fraction having a numerator as a 1 is called a unit fraction. How? Let's see the examples of Let's see the examples. 1 upon 11, 1 upon 9, 1 upon 81, 1 upon 64, 1 upon 7. These are the examples of unit fraction, because in all the cases you can see 1 as we are taking a 1 as a numerator, and you can take any value in the denominator. That is why you can say
these examples are called or known as a unit fraction. So this is the examples and this is the types of fractions we have studied in this lecture. You are studied in this lecture, and I hope all the doubts are clear regarding types of fractions. So thank you very much. Have a great day. Goodbye.